Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's session, we are going to start chapter number 11. Okay, and the name of this chapter is communication. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to see what is the meaning of communication. Okay, and what are the means of individual communication or means of mass communication. Means, first of all, we are going to see the concept of communication and how many types of communication. There are two types of communication: individual communication and mass communication. So in this chapter we are going to see all these topics in detail. So come with me and let's start the chapter. The growth of science and technology has brought about a rapid change in communication. See, day by day, science and technology is developing. So, the science and technology development has brought a tremendous change in the field of communication. It is the sending and receiving of spoken and written messages between the people and the places. So this is the definition of communication. Okay, what is the meaning of communication? Here you can see sending and receiving of a spoken or written message between the people and places. Okay, this is called as communication. Communication का क्या मतलब है? Communication का मतलब है हम जब कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम लेते हैं, चाहे हम अकेले इंफॉर्मेशन भेजें या रिसीव करें, चाहे हम ग्रुप में इंफॉर्मेशन भेजें या रिसीव करें. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आवर कम्युनिकेशन प्रोसेस. In different countries, people use different languages to communicate with one another. You all know, my dear student, there are many different countries present in our planet Earth. So the language of all those countries are different. So the people use different languages to communicate with each other. Okay, they speak and write their informations in their particular languages. Okay, so they speak means they speak in their native language, and as well as they write all their informations in their native language. Like we, the people of India, we usually use Hindi language. Okay, and after Hindi language we use English language. Okay, similarly the people of United Kingdom or US and Australia, they write only in English language. Okay, so on the other hand, the people of Japan, okay, they use their Japanese language to communication. Okay, China people use Chinese language. Okay, so similarly you can see the people who used to live in different parts of the world, they use their own language for communication purpose. We also share our ideas and informations by using language. Okay, so through this communication in the form of our language, we can share our ideas and we can share our informations. Okay, now in the early time, men used to share their ideas and information through indicating डिफरेंट बॉडी साइंस. अच्छा, अभी जो ये हमने पढ़ा ना, ये हम मॉडर्न डे के बारे में पढ़ रहे हैं, बट व्हाट अबाउट आवर एंशिएंट वर्ल्ड? पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? अपने आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे बॉडी साइंस का यूज करके, मीन्स बॉडी सिग्नल्स का यूज करके. द पीपल यूज टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन अर्ली टाइम्स. ओके, लेटर दे लर्न टू ड्रॉ पिक्चर्स टू कम्युनिकेशन. ठीक है, पहले वो क्या करते थे? सिग्नल्स का यूज करते थे जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे. फिर धीरे धीरे उन्होंने डेवलप किया कि वो कम्युनिकेशन पिक्चर्स ड्रॉ करके भी कर सकते हैं. ठीक है, gradually with the advent of language, man started communicate with others using script. फिर धीरे धीरे जब चेंजेस आते गए, तब लोगों को समझ में आया कि ओके, if we want to change, if we want to exchange the ideas and knowledge with each other, then we can also take the help of scripts. Okay, later on, man, animals and birds were used to send messages in earlier times. Okay, पहले क्या होता था? Pigeons का use किया जाता था. Here you can see the picture of a pigeon, and this pigeon is carrying a letter. Okay, so in earlier times, my dear student, people used man as in their informant, animals and birds. In birds, especially pigeons, to send messages in earlier times. Okay, it's in earlier times, man, animals and birds, they were used for receiving and sending the informations.
These way to send messages were not reliable and these were very slow. पर आपको पता है जब पहले के लोग क्या करते थे, किसी को अपना दूत बनाकर भेजते थे, मतलब अपना इंफॉर्मेंट बना के भेजते थे, एनिमल्स को भेजते थे और बर्ड्स को भेजते थे। पर ये क्या करते थे, ये बहुत लंबा टाइम लेते थे क्योंकि इन्हें ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, ठीक है, तो ये बहुत लंबा टाइम लेते थे, ठीक है। और इन्हें क्या होता था, ये सही भी नहीं होता था। मान लो किसी इन्फॉर्मेंट को आपने भेजा, अगर वो रास्ता भटक गया तो, और अगर आप किसी मान लो पीजन का शिकार हो गया तो कैसे, तो क्या होता था, इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाते थे, और अगर पहुंच भी जाते थे तो बहुत लेट से पहुंचते थे, ठीक है। Today, communication play an important role in the progress of human being. So, in today modern world, communication play a very important role in shaping the human future. Okay, these are the fast as well as reliable. So, in today's world, communication process is very fast as well as reliable process. Okay. Now, what are the modes of modern day communication? Here you can see in today's world, there are various types of mode of communication. Like we can communicate with the help of letters, telephones, mobile phones, fax, television, radios, newspapers and telegrams. Okay. So these all are the modern day means of communication. Okay. Through which people can communicate today. These means of communication are used to send news or information to the people living in other places. Okay. So my dear student, all these means of communication are used to send and receive information from one place to another place. Okay. So now my dear student, we are going to see the types of communication. Okay. So the first type of communication is means of individual communication. ठीक है, जब आपको किसी एक के ही साथ बात करनी हो, ठीक है, जब आपको किसी एक के साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, that type of information sharing is called as individual communication. Okay, so come with me and let's see what type of things falls under information communication. So communication through letters. So first thing comes under individual communication is communicating with letters. Postal letter is the cheapest and one of the popular means of communication. See, postal letters, okay, postal letters are one of the very widely used and cheap means of communication, individual communication. We write letters to our friends and relatives. We used to write letter to our friends and families. We put them in the letterbox destination place with the address. Okay, so after finishing our letter, we wrote address. Okay, and we put that letter into letter box. These letters are collected by postman. Okay, so when we post our letter in a letter box, those letters are collected by a person named as postman. Okay, we can send money to someone through money orders. Even with the help of letters called as money orders, we can send money. Letter and parcels are carried by trains, buses, aeroplane and ships to distant places. Okay, see, so letters are carried from one place to another place with the help of train, buses, aeroplanes in the form of parcels. Okay, so here you can see these are the examples of our letters. Okay, now there are some facts are also available. Nowadays courier service are being used to send urgent or important letters and parcels. So the second mode of individual communication is telephone. Okay, telephone is one of the fastest means of communication. So telephone is one of the most fastest means of communication. It is individual communication. It facilitates a two-way communication where both the speaker and the listeners can converse freely with each other. See, letter is only one-way communication. Okay, but telephone is a two-way communication at a time. Okay, at a moment. Okay, at a moment. Okay, but letter is not a two-way communication at a moment, but telephone is a two-way communication. Okay, at a moment a sender and receiver both can talk with each other. Okay, they are not only very fast but also link for distant location within no time. अच्छा, ये सिर्फ फास्ट ही नहीं होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इवन ये आपको किसी भी दूरी मतलब बहुत दूर जगह को भी कनेक्ट कर सकते हैं एक ही साथ. ठीक है, as well as we can send voice messages. Nowadays we can use mobile phones. ठीक है,
टेलीफोन पे हम लोग वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं। और नाउ अ डेज कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है? यू कैन सी मोबाइल फोन्स। ओके, मोबाइल फोन्स आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ individual communication. Okay, so here you can see telephone and mobile. Okay, telephone and mobile. So the third mode of individual communication is communication with the help of fax. Okay, facsimile fax machine is used to transmit the exact copy of pictures of printed material from one place to another. अच्छा, फैक्स क्या होता है? फैक्स एक मेल मशीन होता है जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन एज इट इज वो जैसे लिखा हुआ है उसका प्रिंट आउट मतलब उसका हार्ड कॉपी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अ फैक्स यूजेस अ टेलीफोन लाइन टू सेंड और टू रिसीव अ मैसेज। अच्छा, फैक्स क्या करता है? टेलीफोन लाइन को यूज करता है मैसेज भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए। हियर यू कैन सी दिस इज अ फैक्स मशीन। ओके, so my dear student, letter, telephone and faxes, all these are the mode of our individual communication. Now we are going to see the mode of our mass communication. But before I proceed telling what are the modes of mass communication, let me clear you what is the meaning of mass communication. Individual communication means only two persons are talking with each other. Okay, but here in mass communication you can see the definition of mass communication is communicating with a large number of people at a time. Okay, when you are communicating with a large number of people at a time. Okay, so that type of communication is called as mass communication. Okay, sometimes it is required to communicate a message to a large number of people simultaneously. Device which facilitate such communication are called the mass communication. Okay, कभी कभी क्या होता है, हमें एक साथ बहुत से लोगों से बात करनी होती है। ठीक है, तो वो जो हम बात करते हैं ना इतने लोगों से एक साथ, उसी को हम कहते हैं हमारा मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से मोड है मास कम्युनिकेशन के। सो द फर्स्ट मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज आवर टेलीविजन, टीवी। ओके, टेलीविजन आर यूज्ड टू सेंड अ वीडियो मैसेज विद ऑडियो। ठीक है, अच्छा, लेटर्स में और फैक्स मशीन में can we watch pictures? No, we can't watch pictures. Okay, but in television we can communicate, we can not only communicate. Okay, we are not only communicating our messages to a large audience, but still we can send them a video message, means we are communicating with them in the form of video. Okay, we can hear and see the programs on the television. हम लोग टीवी पे क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इट मेक्स व्यूइंग मोर इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल। तो जब आप कोई चीज सुनते भी हो और देखते भी हो तो बड़ा मजा आता है, वो और मजा आता है देखने में। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ आवर टेलीविजन। नाउ द सेकंड मोड ऑफ आवर मास कम्युनिकेशन इज रेडियो। ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ रेडियो। रेडियो इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। रेडियो दो ही चीजों के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, एक तो न्यूज सुनने के लिए और दूसरा एंटरटेनमेंट मतलब गाना सुनने के लिए। ठीक है, radio is used for receiving many types of messages that are meant for entertainment, education and information. रेडियो के थ्रू हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कौन कौन से फील्ड की? जैसे आप ले सकते हो एंटरटेनमेंट फील्ड की नॉलेज, एडुकेशन फील्ड की नॉलेज और इंफॉर्मेशन फील्ड की। ठीक है, nowadays FM is very popular. ठीक है, अच्छा, FM चैनल्स आते हैं। ठीक है, एफएम चैनल आता है, उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, तो एफएम चैनल्स आज के टाइम पे रेडियो में बहुत फेमस है। एफएम चैनल पे हम गाने सुनते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज आवर न्यूज़पेपर्स। ओके, द न्यूज़पेपर आर रीड बाय मिलियंस ऑफ पीपल इन अ डे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके घर में जब आप लोग सुबह उठते हो तो आप लोग देखते हो अगर आपके पापा और अगर आपके दादा दादी हैं घर में तो वो क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो एक शीट पेपर पढ़ते हैं ना लेके, शीट ऑफ पेपर, उसी को हम न्यूज़पेपर कहते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर क्या होता है, डेली मिलियंस ऑफ पीपल के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स कैरी न्यूज। ठीक है, अच्छा, न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगजीन्स भी आता है। न्यूज़पेपर में तो सबकी इंफॉर्मेशन होती है। अब ये मैगजीन क्या होती है? मैगजीन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड को डेडिकेटेड होता है, जैसे स्पोर्ट्स मैगजीन, एंटरटेनमेंट मैगजीन, पॉलिटिकल मैगजीन। ओके, तो इन सब में क्या होता है, पॉलिटिकल मैगजीन में सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें होती हैं,
एंटरटेनमेंट मैगजीन का मतलब क्या है, यहाँ पे फिल्म से जुड़ी हुई बातें होंगी, ठीक है। स्पोर्ट्स मैगजीन मीन्स all the information related with sports is mentioned in sports magazine. Okay, so newspapers and magazines on a daily basis carries news, views and information about events all over the world. Okay, so here you can see this is a picture of a newspaper. Now, the last mode of mass communication is mass communication with the help of computer. Okay, computers are used to send or receive email through the internet. With the help of computer, we can send electronic mail, means email, with a large group of or a mass group of people. The internet is a network of computers all over the world. अच्छा, कंप्यूटर देख सकते हो, कंप्यूटर किससे चलता है, ठीक है। कंप्यूटर तो एक मशीन है, तो ये किससे चलता है, ये चलता है आपका इंटरनेट से, ठीक है। तो इंटरनेट की ही वजह से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर्स हैं वो रन होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, सो कम विद मी एंड लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. Okay, my dear student, the first point which we have to remember, what is the meaning of communication? Communication is the means of sending and receiving messages between two persons, okay, or more persons. Telephone, mobile and emails are modern means of communication, okay. If anyone asks you, tell me what are the modern means of communication, immediately tell them telephone, mobile phones and electronic mails, okay. They all are the modern means of communication. In modern time, we use different means of communication. So my dear student, this is all about in this chapter. I hope you got a very good understanding of this chapter. Okay, now revise this chapter, okay, and complete all the exercise based on this chapter. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new video. Till then, take very good care of yourself. Bye.